Assalamu alaikum guys. Welcome to Zainematics, and for most of you guys this is going to be the last video you're watching in context to your syllabus or studies. It has been a great year teaching you guys, and this video is going to be a goodbye video for many of you guys. It's been a great year to know a lot of you guys. In many ways this year has been full of ups and downs, and I wanted to thank all of you guys for waiting up on me when I used to delay the classes or used to not show up for classes. You guys really supported me in that process. This year was a very difficult year for me in the sense that I got sick twice. I had COVID before, and then in November I fell sick again, and there was a lot of things happening at my end as well. Many of you guys were really troubled with how things were going, and I hope by the end things were satisfactory for you guys. Apart from that, thank you so much for cooperating so much and always showing in the classes and in YouTube streams, even though I used to do them at late at night, say after 12 o'clock or 2 o'clock in the 2 a.m. in the night. That was a great experience for me as well, and I was so overwhelmed by the response that I got from many of you guys. I hope and I wish all of you amazingly good grades, and I am sending a lot of prayers for you guys for the future. For those of you who are going from O levels to A levels and are going to keep mathematics, I'll be seeing you inshallah. For those of you who are moving from A1s to A2s, of course we will be seeing each other soon. And for those of you who are not going to study maths after O levels, and for those of you who are passing out your A levels, I want to wish you all the luck, and I want to say farewell to you guys. It has been a great time being your teacher, and even now, if I think it's always really difficult for me to make a goodbye video because it's really nostalgic for me when I come to think of the whole year as it has been spent, and I will miss each one of you, even though I know that many of you have never met me in person, but I have seen your messages in the chat box, and I have known you through that experience as well. Thank you so much कि आप लोगों ने मेरी स्कोल्डिंग सुनी है थ्रू आउट. बहुत सारे लोगों ने मेरी रोस्टिंग बर्दाश्त की है. Thank you for being there for me. Thank you for being a constant support to my channel. Thank you for making Zainematics grow where it has become. Honestly speaking, it feels like just like a dream. I never knew that there was so much potential for this sort of work as well. And it really rejuvenates my faith in humanity as well, that people do respond to good stuff as well. Apart from there is all sorts of negativity that we experience in our real lives and on our social media that is filled with it. Amidst all of that, I found so much love and care from you guys that I'm really thankful to you guys for that, and I will miss each one of you a lot. You have no idea. So I get really attached to people very quickly, and that is how I am a person, and I will really miss all of you. That's all I can say, and it makes me emotional every time I'm making a goodbye video. You guys will always be a special batch for me. Every batch is a special batch for me. I have a connection with all of my old students. If you ever want to reach out to me for everything, I know it's difficult to reach out to me sometimes, but you guys can connect to Ms. 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘶 and everything. You guys can reach out to me if you are ever in trouble or you need me in any sort of advice or everything. And apart from that, I always want to include a particular aspect in my goodbye videos, and that is that being your teacher, being a mentor, as I learned from my mentors, I feel it's my responsibility to pass it on to you guys, what I have learned in this 10 years, 12 years of learning, what I want you guys to learn quicker than me, which I had to learn through experiences.
मुझे बहुत ये फील होता है कि हमारी यंगर जनरेशन्स को पता होना चाहिए, जो स्टेप्स हमने लेट सीखे हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, वो आप मेरे से सुन के सीख लो. सो देयर आर ऑलवेज अ कपल ऑफ एडवाइसेस I always give my students. The first one is that all of us have to go through some sort of stress, some sort of trauma in our lives on a daily basis. There are so many unresolved issues at the end of the day. There are so many troubles that are bothering our minds at the beginning of each day. And हम में से बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, हम में से बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. उसके लिए मैं हमेशा, मेरा एक वन लाइनर है जो मैं यूज़ करता हूँ. आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ पे पढ़ा था, बट इट हैज़ हेल्प्ड मी थ्रू द डार्केस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ. इट हैज़ हेल्प्ड मी to pedal through life when I was really hopeless. And that is what I always communicate to my students. आप जब कभी एक situation मतलब overwhelming हो जाए सब कुछ बहुत, when everything seems really really dark, there are two one-liners that I always follow. The first one is and which really helped me shape myself as a person as well. That is, do not worry about things you cannot change. Now this is, at first it seems a very simple line. Do not worry about things you cannot change. When I first heard it, I did not really connect to it. But when you think about it, हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास 5 या 7 या 10 ट्रबल्स हैं जो हमें सारा टाइम तंग कर रही होती हैं, और हम क्या करते हैं, हम उन सब चीज़ों को इकट्ठा सोचना शुरू कर देते हैं. एंड दैट creates like a pressure cooker in our brain, or many of us do not stand to that nervous pressure. तो उसका बड़ा एक आसान सा हल है. There are some things जो आपके कंट्रोल में है, जिनके ऊपर अगर आप एफर्ट करोगे तो वो चेंज हो सकती हैं. There are some things जो अल्लाह ताला ने आपके कंट्रोल के बियॉन्ड रखी हुई हैं. मोस्टली वो चीज़ें वो होती हैं जो पास्ट में हो गई हुई हैं. ठीक है, जिस तरह आप पेपर दे आए हो, अब वो पेपर आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर बार बार परेशान होने से you're just messing up with your nervous system. तो do not worry about, आपने जब भी आप परेशान हो, just ask yourself this one little question: is there something I can do to fix this situation? If there is, then act. That is the best policy. If there isn't, then stop worrying about it. अल्लाह ताला पे छोड़ दें और दुआ करें उसके लिए, and hopefully it will fix itself खुद से. और in the longer run ये चीज़ बहुत ज़्यादा पे ऑफ करती है. Secondly, हम सब की ज़िंदगियों में at some point in time एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हम रॉक बॉटम फील करते हैं. एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज हमारी जो आप जनरेशन हो ना, जो आप जेन जी लोग हो, आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो रिसेंटली. एंड यू नो देयर इज़ सो लेस एम्फेसिस पुट ऑन टू योर मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग. तो उसके लिए मैं हमेशा, देयर इज़ वन लाइनर दैट लेट मी गोइंग. आई थिंक आई read it in Tolkien's Lord of the Rings when I was a child, and it was such a beautiful line. I think it is Tolkien, I'm not again really sure about it, but the line was so emphasizing, so strong that it hit me to the guts, and I took it very personally in a time when I was in a very dark place in my life. And that line was that, if I remember correctly, that the night is darkest just before the dawn. So when you think everything is going terrible, when you think हर चीज़ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, when you think कि आपने rock bottom hit कर लिया है, the thing about rock bottom is कि there is nothing under the rock bottom. Okay, so there's the only way from a rock bottom is upwards. So gather your strength together and just be patient. वो एक storm होता है sometimes. Times are really testing you. तो वो वाले टाइम पे आपने जस्ट you don't have to react to anything. You just have to steadfast stay put at your place. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. उस टाइम पे आपने इमोशनलेस होना होता है. उस टाइम पे आपने डिसीजंस नहीं लेने होते. उस टाइम पे आपने जस्ट होल्ड योरसेल्फ, फेस द स्टॉर्म, और वो वक्त गुजर जाता है और आप उसके बाद हंसी खुशी उसी वक्त को याद करते हो. सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये अभी आप में से जिन लोगों ने इस फेज़ को नहीं एक्सपीरियंस किया, आप जब 22-23 की एज में जाओगे, ये क्राइसिस आते हैं लाइफ में. आप अपने आप को सेल्फ डाउट भी करते हो, सब कुछ होता है. वहाँ पे ये 2 बातें ज़रूर याद रखिएगा. इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टेकिंग, आई ऑलवेज यूज़, मैं डेली बेसिस पे ये बात देखता हूँ और सोचता हूँ और अपने डिसीजन इस बात पे लेता हूँ कि आई डू नॉट वरी अबाउट थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज. If there is something I can change,
I act upon that. And if there is something I cannot change, अगर मेरे पास feasibility में वो बात समझ ही नहीं आती है, और मोस्टली ये चीज़ें वो होती हैं जो things of past होती हैं, क्योंकि वो हो गई होती हैं, आप सिर्फ उनको सोच के परेशान हो रहे होते हो. Do not think about them. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको एट पीस रखती है. और सेकेंडली, डजेंट मैटर हाउ डार्क द टाइम्स आर, डू नॉट लूज होप. Gather yourself around every time, and you don't know when the time are going to change and flip around. और अभी मैं honestly speaking in my experience मैं अगर बात करता हूँ तो मेरा ये जो dark time था जिसके बारे में बात करता हूँ, that was 8 years back. And in that time, now if I look back, had I given up, I would have not been here with you guys, and I would not have gone through the same journey. तो अगर अभी मेरे से कोई पूछे if I can go back, would I change that dark time? तो I would say no, because that is the process through which I have come till here. तो दुनिया एक process के अंदर है जिसके थ्रू हम सीख रहे होते हैं सारे लोग. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक हम सबको पता होनी चाहिए, हम सबको इसके साथ चलना चाहिए. एंड आई थिंक आप जब ग्रो करोगे तो आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा. There is one last thing that I again want to emphasize in context with your generation. देखो, when I was growing up, एक बड़ा सिंपल सी चीज़ थी कि हमारे पास ना being youngsters अर्न करने का ना कोई और तरीका नहीं था. एक ही तरीका था, ट्यूशन्स पढ़ा लो. तो हमने यही किया. हम पॉकेट मनी के लिए मैं पहले पढ़ाता था, और बाद में मुझे फाइनेंशियल नीड थी, और बाद में मैंने, और इसी प्रोसेस में मैंने रियलाइज़ किया कि आई रियली लव डूइंग दिस, एंड देन आई चोज दिस एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन. और आप इस तरह सीख जाते हो. यू गाइज आर लकी इन करंट, इन न्यू वर्ल्ड, in post internet world, in post fast internet world, the options are unlimited. So I will urge you guys, being a youngster, आपके पास, if you are 16 or 17 or even 18 right now, this is an excellent time to push yourself into a startup. Think आपको किस चीज़ का शौक है, and do begin a startup. Do it or without any cost. आपको जिस चीज़ का शौक है उसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन वर्क करो, मेक एन इंस्टाग्राम पेज, मेक एन ऑनलाइन शॉप फॉर फ्री, एंड start selling something. Start selling your skill, start selling something you can make, start selling something you can bake, and and these sorts of things. Or ठीक है, sometimes they will be successful, sometimes you will be demotivated, and और एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस. फ़ॉरन कुछ भी सक्सेस नहीं हिट करता. मैं कोशिश करूँगा कि मैं पोस्ट में आई शो यू समवेयर ओवर हियर मेरा ज़ाइनेमैटिक्स का पहले साल का ग्रोथ चार्ट, एंड यू गाइज विल रियलाइज़ कि पहले साल में तो ग्रोथ होती ही नहीं है, बहुत डिमोटिवेटिंग होता है. बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. वंस 1 year ended, there was a drastic growth that we experienced as a channel, and had I given up in the first year, you guys would never have heard of me, because I would have given up way before. So please trust the process. 4-5 साल लगाएं. By the time you're 24, by the time you're graduating from your university, आपका एक चलता हुआ स्टार्टअप होगा जिसके अंदर से आप सक्सेसफुली अर्न कर रहे होगे. So instead of running out for jobs, of course it's important to do a job as well, but आपका उस टाइम पे अपना एक independent earning hand होगा. And that is the beauty of new world, is that is possible without any degree, without any experience. आप खुद से ये कर सकते हो. So this is the third thing. I will urge each and every one of you. I will support you to whatever end you guys need me. But trust me, बजाय इसके कि आप 24 की एज तक यूनिवर्सिटी डिग्री लो और उसके बाद सिर्फ जॉब्स के लिए खपो, please do invest your energy in a small startup just because I told you to. Or do stay with that for at least 2 to 3 years. आपको खुद पता चल जाएगा कि वो ग्रो करता है, ठीक है. एंड दुआएं दोगे आप मुझे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ द न्यू वर्ल्ड. अगर आप इसको जल्दी नहीं पकड़ोगे, आप 25 पे जाके रियलाइज करोगे कि ओ नाउ आई डोंट हैव अ जॉब, एंड देन वी हैव अ सोसाइटल प्रेशर टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन बाय द एज ऑफ 30. दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू डू दैट इन 5 years, बिकॉज एवरी प्रोसेस टेक्स अराउंड 10 years. इफ़ वी एक्सक्लूड एक्सेप्शंस, तो 10 साल तो हर बंदे को सक्सेसफुल होते हुए लगते हैं. तो प्लीज़ अपने प्रोसेस को अभी स्टार्ट करें.
ये 3 चीज़ें थी जो आई थिंक दे आर रियली क्लोज टू माई हार्ट. आई ऑलवेज डिस्कस देम इन माई क्लासेज एज वेल. जो मेरी फिजिकल क्लासेज होती हैं, ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं मिलता, क्रैश कोर्स में टाइम नहीं मिलता, बट आई वुड रियली वॉन्ट टू convey this message. I would really want each and every one of you do that, and I would be a very proud teacher to know, and I will be the first customer you will get. Okay, so that is what I can offer you as a support from me, and I really want to wish you guys all the luck in the world. And there is one last request. If you guys feel I have ever been able to help you beyond your expectations, if I was ever helpful to you, and in any way, do always remember me in your prayers. I will always be needing them. Doesn't matter कितने साल गुजर जाते हैं, doesn't matter 20 साल गुजर जाते हैं. Whenever you pray, there's only one request, that do remember me in your prayers by taking my name, and that's all I ask from you guys. And I wish you all the luck in the world, and I'll be seeing you soon. Allah Hafiz.